ओम हनु 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 हनुमते नमः। आज आप दिव्य अंजनेयास्त्र महामंत्र महास्तोत्र श्रवण करने जा रहे हैं। इस स्त्रोत के पाठन करने से, श्रवण करने से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। मारण, मोहन, उच्चाटन जैसी बाधाएं इस स्त्रोत के पाठ करने से समाप्त हो जाती हैं। शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है। रोग बाधा, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। चलिए श्रवण करते हैं दिव्य आंजनेयास्त्र महास्तोत्र और मंत्र और कृपा की प्राप्ति करते हैं। आंजनेयास्त्रम अधुना गिरिजानंद आंजनेयास्त्रमुत्तमं समंत्रं सप्रयोगं च वद मे परमेश्वर। ईश्वर उवाच ब्रह्मास्त्रं स्तंभकाधारि महाबलपराक्रमम् मंत्रोद्धारमहं भक्षे शृणु त्वं परमेश्वरी। आदौ प्रणवमुच्चार्य मायामन्मथभाग्भवं शक्तिवाराहबीजं वा वायुबीजमनन्तरं विषयं द्वितीयं पश्चात् वायुबीजमनन्तरं ग्रसयुगमं पुनर्वायुबीजं चोच्चार्य पार्वती। स्फुरयुगमं वायुबीजं प्रस्फुर द्वितीयं पुनः वायुबीजं ततोच्चार्यं हुं फट् स्वाहा समन्वितम्। आंजनेयास्त्रमनघे पंचदशाक्षरम् कालरुद्रो ऋषिः प्रोक्तो गायत्री छंद उच्यते। देवता विश्वरूपश्री वायुपुत्रः कुलेश्वरी। ह्रूं बीजं कीलकं ग्लौं च ह्रींकार शक्तिमेव च प्रयोगं सर्वकार्येषु शास्त्रेणानेन पार्वती। विद्वेषोच्चाटनेस्यैव मारणेषु प्रशस्यते विनियोगः। ओमस्य श्री हनुमानांजनेयास्त्र विद्यामन्त्रस्य कालरुद्र ऋषिः गायत्री छन्दः विश्वरूप श्री वायुपुत्रो देवता। ह्रूं बीजं ग्लौं कीलकं ह्रीं शक्तिः मम शत्रुनिग्रहार्थे हनुमन्नस्त्र जपे विनियोगः। ॐ ह्रीं क्लीं ऐं सौं ग्लौं यं सौसै सौसै यं ग्रस ग्रस यं विदारय विदारय यं भस्मी कुरु कुरु यं स्फुर स्फुर यं प्रस्फुर प्रस्फुर यं सौं ग्लौं हुं फट् स्वाहा। नामद्वयं समुच्चार्यं मन्त्रदौ कुलसुन्दरी। प्रयोगेषु तथान्येषु सुप्रशस्तो ह्ययं मनुः। आदौ विद्वेषणं वक्षे मन्त्रेणानेन पार्वती। काकोलूकदलग्रन्थि पवित्रीकृत बुद्धिमान् तर्पयेच्छतभारं तु त्रिदिनाद्वेषमाप्नुयात्। ईक्षकर्ममिदं ममन्त्रान्ते त्रिशतं जपे वसिष्ठारुन्धतीभ्यां च भवोद्विद्वेषणं प्रिये। महद्विद्वेषणं भूत्वा गुरुशब्दं विना प्रिये। मन्त्रं त्रिंशतमुच्चार्य नित्यं मे कलह प्रिये। ग्राहस्थाने ग्रामपदे उच्चार्याष्टशतं जपे। ग्रामान्योन्यं भवेद्वैर इष्टलाभो भवेत् प्रिये। देशशब्दसमुच्चार्य द्विसहस्रं जपेन्मनुं। देशो नाशं समायाति अन्योन्यं क्लेशमेव च। रणशब्दं समुच्चार्य जपेदष्टोत्तरं शतम्। अगनौ नता तदा वायु दिनान्ते कलहो भवेत्। उच्चाटन प्रयोगं च वक्षेऽहं तव शुभ्रते। उच्चाटन
उच्चाटनपदान्तं च अस्त्रमष्टोत्तरं शतं तर्पयेद्भानुवारे यो निशायां लवणाम्बुना त्रिदिनादिकमन्त्रान्ते उच्चाटनमथो भवे भौमे रात्रौ तथा नगनो हनुमन्मूलमृत्तिकां नगनेन सङ्गृहीत्वा तु स्पष्टवाचाष्टोत्तरं जपे समांसं च प्रेतभस्म शल्यचूर्णे समांसकं यस्य मूर्ध्नि क्षिपेत् सद्यः काकवद्भ्रमते महीं विप्रचाण्डालयोः शल्यं चिताभस्म तथैव च हनुमन्मूले मृदग्राह्य बद्ध्वा प्रेतपटेन तु गृहे वा ग्राममध्ये वा पत्तने रणमध्यमे निक्षिपे शत्रुगर्तेषु सद्यश्चोच्चाटनं भवे तडागे स्थापयित्वा तु जलदारिद्र्यमाप्नुयात् मारणं सम्प्रवक्ष्यामि तवाहं शृणु सुब्रते नरस्थिलेखनीं कृत्वा चिताङ्गारं च कज्जलं प्रेतवस्त्रे लिखेदस्त्रं गर्ते कृत्वा समुत्तमं शंसाने निखनेत् सद्यः सहस्राद्रिपुमारणे न कुर्याद्विप्रजातिभ्यो मारणं मुक्तिमिच्छता देवानां ब्राह्मणानां च गवां चैव सुरेश्वरि उपद्रवं न कुर्वीत द्वेषबुद्ध्या कदाचन प्रयोक्तव्यं तथान्येषां न दोषो मुनिरब्रवीत इति सुदर्शन संहिताया आञ्जनेयास्त्रं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः आञ्जनेयास्त्रम् अधुना गिरिजानन्द आञ्जनेयास्त्रमुत्तमं समन्त्रं सप्रयोगं च वद मे परमेश्वर ईश्वर उवाच ब्रह्मास्त्रं स्तम्भकाधारि महाबलपराक्रमम् मन्त्रोद्धारमहं भक्षे शृणु त्वं परमेश्वरी आदौ प्रणवमुच्चार्य मायामन्मथवाग्भवं शक्तिवाराहबीजं वा वायुबीजमनन्तरं विषयं द्वितीयं पश्चात् वायुबीजमनन्तरं ग्रसयुगमं पुनर्वायुबीजं चोच्चार्य पार्वती स्फुरयुगमं वायुबीजं प्रस्फुरद्वितीयं पुनः वायुबीजं ततोच्चार्यं हुं फट् स्वाहा समन्वितम् आञ्जनेयास्त्रमनघे पञ्चदशाक्षरम् कालरुद्रो ऋषिः प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते देवता विश्वरूपश्री वायुपुत्रः कुलेश्वरी ह्रूं बीजं कीलकं ग्लौं च ह्रींकारशक्तिमेव च प्रयोगं सर्वकार्येषु शास्त्रेणानेन पार्वती विद्वेषोच्चाटनेस्येव मारणेषु प्रशस्यते विनियोगः ओमस्य श्री हनुमानाञ्जनेयास्त्र विद्यामन्त्रस्य कालरुद्र ऋषिः गायत्री छन्दः विश्वरूप श्री वायुपुत्रो देवता ह्रूं बीजं ग्लौं कीलकं ह्रीं शक्तिः मम शत्रुनिग्रहार्थे हनुमन्नस्त्रजपे विनियोगः ॐ ह्रीं क्लीं ऐं सौं ग्लौं यं सौसै
यं ग्रस ग्रस यं विदारय विदारय यं भस्मी कुरु कुरु यं स्फुर स्फुर यं प्रस्फुर प्रस्फुर यं सौं ग्लौं हुं फट स्वाहा नामद्वयं समुच्चार्यं मन्त्रदौ कुलसुन्दरी प्रयोगेषु तथान्येषु सुप्रशस्तो ह्ययं मनुः आदौ विद्वेषणं वक्षे मन्त्रेणानेन पार्वती काकोलूकदलग्रन्थि पवित्रीकृत बुद्धिमान् तर्पयेच्छतवारं तु त्रिदिनाद्वेषमाप्नुयात् ईक्षकर्ममिदं ममन्त्रान्ते 300 जपेत् वसिष्ठारुन्धतीभ्यां च भवोद्विद्वेषणं प्रिये महद्विद्वेषणं भूत्वा गुरुशब्दं विना प्रिये मन्त्रं 300 नित्यं मे कलह प्रिये ग्राहस्थाने ग्रामपदे उच्चार्याष्टशतं जपे ग्रामान्योन्यं भवेद्वैर निष्टलाभो भवेत् प्रिये देशशब्दसमुच्चार्य 2सहस्रं जपेन्मनुं देशो नाशं समायाति अन्योन्यं क्लेशमेव च रणशब्दं समुच्चार्य जपेदष्टोत्तरं 100 अगनौ नता तदा वायु दिनान्ते कलहो भवेत् उच्चाटन प्रयोगं च वक्षेऽहं तव शुभ्रते उच्चाटन पदान्तं च अस्त्रमष्टोत्तरं 100 तर्पयेद्भानुवारे यो निशायां लवणाम्बुना त्रिदिनादिकमन्त्रान्ते उच्चाटनमथो भवे भौमे रात्रौ तथा नगनो हनुमन्मूलमृत्तिकां नगनेन सङ्गृहीत्वा तु स्पष्टवाचाष्टोत्तरं जपे समांसं च प्रेतभस्म सल्लचूर्णे समांसकं यस्य मूर्ध्नि क्षिपेत् सद्यः काकवद्भ्रमते महीं विप्रचाण्डालयोः शल्यं चिताभस्म तथैव च हनुमन्मूले मृदग्राह्य बद्ध्वा प्रेतपटेन तु गृहे वा ग्राममध्ये वा पत्तने रणमध्यमे निक्षिपे शत्रुगर्तेषु सद्यश्चोच्चाटनं भवेत् तडागे स्थापयित्वा तु जलदारिद्र्यमाप्नुयात् मारणं सम्प्रवक्ष्यामि तवाहं शृणु सुब्रते नरस्थिलेखनीं कृत्वा चिताङ्गारं च कज्जलं प्रेतवस्त्रे लिखेदस्त्रं गर्ते कृत्वा समुत्तमं शंसाने निखनेत् सद्यः सहस्राद्रिपुमारणे न कुर्याद् विप्रजातिभ्यो मारणं मुक्तिमिच्छता देवानां ब्राह्मणानां च गवां चैव सुरेश्वरि उपद्रवं न कुर्वीत द्वेषबुद्ध्या कदाचन प्रयोक्तव्यं तथान्येषां न दोषो मुनिरब्रवीत इति सुदर्शन संहिताया आञ्जनेयास्त्रं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः आञ्जनेयास्त्रम् अधुना गिरिजानन्द आञ्जनेयास्त्रमुत्तरं
उत्तमं समन्त्रं सप्रयोगं च वद मे परमेश्वर ईश्वर उवाच ब्रह्मास्त्रं स्तम्भकाधारि महाबलपराक्रमम् मन्त्रोद्धारमहं भक्षे शृणु त्वं परमेश्वरी आदौ प्रणवमुच्चार्य मायामन्मथवाग्भवं शक्तिवाराहबीजं वा वायुबीजमनन्तरं विषयं द्वितीयं पश्चात् वायुबीजमनन्तरं ग्रसयुगमं पुनर्वायुबीजं चोच्चार्य पार्वती स्फुरयुगमं वायुबीजं प्रस्फुरद्वितीयं पुनः वायुबीजं ततोच्चार्यं हुं फट् स्वाहा समन्वितम् आञ्जनेयास्त्रमनघे पञ्चदशाक्षरम् कालरुद्रो ऋषिः प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते देवता विश्वरूपश्री वायुपुत्रः कुलेश्वरी ह्रूं बीजं कीलकं ग्लौं च ह्रींकारशक्तिमेव च प्रयोगं सर्वकार्येषु शास्त्रेणानेन पार्वती विद्वेषोच्चाटनेस्येव मारणेषु प्रशस्यते विनियोगः ओमस्य श्री हनुमानाञ्जनेयास्त्र विद्यामन्त्रस्य कालरुद्र ऋषिः गायत्री छन्दः विश्वरूप श्री वायुपुत्रो देवता ह्रूं बीजं ग्लौं कीलकं ह्रीं शक्तिः मम शत्रुनिग्रहार्थे हनुमन्नस्त्र जपे विनियोगः ॐ ह्रीं क्लीं ऐं सौं ग्लौं यं सौसै सौसै यं ग्रस ग्रस यं विदारय विदारय यं भस्मी कुरु कुरु यं स्फुर स्फुर यं प्रस्फुर प्रस्फुर यं सौं ग्लौं हुं फट् स्वाहा नामद्वयं समुच्चार्यं मन्त्रदौ कुलसुन्दरी प्रयोगेषु तथान्येषु सुप्रशस्तो ह्ययं मनुः आदौ विद्वेषणं वक्षे मन्त्रेणानेन पार्वती काकोलूकदलग्रन्थि पवित्रीकृतबुद्धिमान् तर्पयेच्छतवारं तु त्रिदिनाद्वेषमाप्नुयात् ईक्षकर्ममिदम् ममन्त्रान्ते त्रिशतं जपे वसिष्ठारुन्धतीभ्यां च भवोद्विद्वेषणं प्रिये महद्विद्वेषणं भूत्वा गुरुशब्दं विना प्रिये मन्त्रं त्रिंशतमुच्चार्य नित्यं मे कलह प्रिये ग्राहस्थाने ग्रामपदे उच्चार्याष्टशतं जपे ग्रामान्योन्यं भवेद्वैर निष्टलाभो भवेत् प्रिये देशशब्दसमुच्चार्य द्विसहस्रं जपेन्मनुं देशो नाशं समायाति अन्योन्यं क्लेशमेव च रणशब्दं समुच्चार्य जपेदष्टोत्तरं शतम् अगनौ नता तदा वायु दिनान्ते कलहो भवेत् उच्चाटन प्रयोगं च वक्षेऽहं तव शुभ्रते उच्चाटन पदान्तं च अस्त्रमष्टोत्तरं शतं तर्पयेद्भानुवारेयो निशायां लवणाम्बुना त्रिदिनादिकमन्त्रान्ते उच्चाटनमथो
भवेत् भौमे रात्रौ तथा नगनो हनुमन्मूलमृत्तिकां नगनेन सङ्गृहीत्वा तु स्पष्टवाचाष्टोत्तरं जपे समांसं च प्रेतभस्म सल्लचूर्णे समांसकं यस्य मूर्ध्नि क्षिपेत् सद्यः काकवद्भ्रमते महीं विप्रचाण्डालयोः शल्यं चिताभस्म तथैव च हनुमन्मूले मृदग्राह्य बद्ध्वा प्रेतपटेन तु गृहे वा ग्राममध्ये वा पत्तने रणमध्यमे निक्षिपे शत्रुगर्तेषु सद्यश्चोच्चाटनं भवेत् तडागे स्थापयित्वा तु जलदारिद्र्यमाप्नुयात् मारणं सम्प्रवक्ष्यामि तवाहं शृणु सुब्रते नरस्थिलेखनीं कृत्वा चिताङ्गारं च कज्जलं प्रेतवस्त्रे लिखेदस्त्रं गर्ते कृत्वा समुत्तमं शंसाने निखनेत् सद्यः सहस्राद्रिपुमारणे न कुर्याद् विप्रजातिभ्यो मारणं मुक्तिमिच्छता देवानां ब्राह्मणानां च गवां चैव सुरेश्वरि उपद्रवं न कुर्वीत द्वेषबुद्ध्या कदाचन प्रयोक्तव्यं तथान्येषां न दोषो मुनिरब्रवीत इति सुदर्शन संहिताया आञ्जनेयास्त्रं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः आञ्जनेयास्त्रम् अधुना गिरिजानन्द आञ्जनेयास्त्रमुत्तमं समन्त्रं सप्रयोगं च वद मे परमेश्वर ईश्वर उवाच ब्रह्मास्त्रं स्तम्भकाधारि महाबलपराक्रमम् मन्त्रोद्धारमहं भक्षे शृणु त्वं परमेश्वरि आदौ प्रणवमुच्चार्य मायामन्मथवाग्भवं शक्तिवाराहबीजं वा वायुबीजमनन्तरं विषयं द्वितीयं पश्चात् वायुबीजमनन्तरं ग्रसयुगमं पुनर्वायुबीजं चोच्चार्य पार्वती स्फुरयुगमं वायुबीजं प्रस्फुर द्वितीयं पुनः वायुबीजं ततोच्चार्यं हुं फट् स्वाहा समन्वितम् आञ्जनेयास्त्रमनघे पञ्चदशाक्षरम् कालरुद्रो ऋषिः प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते देवता विश्वरूपश्री वायुपुत्रः कुलेश्वरी ह्रूं बीजं कीलकं ग्लौं च ह्रींकारशक्तिमेव च प्रयोगं सर्वकार्येषु शास्त्रेणानेन पार्वती विद्वेषोच्चाटनेस्येव मारणेषु प्रशस्यते विनियोगः ओमस्य श्री हनुमानाञ्जनेयास्त्र विद्यामन्त्रस्य कालरुद्र ऋषिः गायत्री छन्दः विश्वरूप श्री वायुपुत्रो देवता ह्रूं बीजं ग्लौं कीलकं ह्रीं शक्तिः मम शत्रुनिग्रहार्थे हनुमन्नस्त्रजपे विनियोगः ॐ ह्रीं क्लीं ऐं सौं ग्लौं यं सौसय सूसय यं ग्रस ग्रस यं विदार विदार यं भस्मीकुरु कुरु यं स्फुर स्फुर यं प्रस्फुर प्रस्फुर यं सौं ग्लौं हुं फट स्वाहा
नामद्वयं समुच्चार्यं मन्त्रदौ कुलसुन्दरी प्रयोगेषु तथान्येषु सुप्रशस्तो ह्ययं मनुः आदौ विद्वेषणं वक्षे मन्त्रेणानेन पार्वती काकोलूकदलग्रन्थि पवित्रीकृत बुद्धिमान् तर्पयेच्छतवारं तु त्रिदिनाद्वेषमाप्नुयात् ईक्षकर्ममिदम् ममन्त्रान्ते 300 जपे वसिष्ठारुन्धतीभ्यां च भवोद्विद्वेषणं प्रिये महद्विद्वेषणं भूत्वा गुरुशब्दं विना प्रिये मन्त्रं 300मुच्चार्य नित्यं मे कलह प्रिये ग्राहस्थाने ग्रामपदे उच्चार्याष्टशतं जपे ग्रामान्योन्यं भवेद्वैर निष्टलाभो भवेत् प्रिये देशशब्दसमुच्चार्य 2सहस्रं जपेन्मनुं देशो नाशं समायाति अन्योन्यं क्लेशमेव च रणशब्दं समुच्चार्य जपेदष्टोत्तरं 100 अगनौ नता तदा वायु दिनान्ते कलहो भवेत् उच्चाटन प्रयोगं च वक्षेऽहं तव शुभ्रते उच्चाटन पदान्तं च अस्त्रमष्टोत्तरं 100 तर्पयेद्भानुवारे यो निशायां लवणाम्बुना त्रिदिनादिकमन्त्रान्ते उच्चाटनमथो भवे भौमे रात्रौ तथा नगनो हनुमन्मूलमृत्तिकां नगनेन संगृहीत्वा तु स्पष्टवाचाष्टोत्तरं जपे समांसं च प्रेतभस्म सल्लचूर्णे समांसकं यस्य मूर्ध्नि क्षिपेत् सद्यः काकवद्भ्रमते महीं विप्रचाण्डालयोः शल्यं चिताभस्म तथैव च हनुमन्मूले मृदग्राह्य बद्ध्वा प्रेतपटेन तु गृहे वा ग्राममध्ये वा पत्तने रणमध्यमे निक्षिपे शत्रुगर्तेषु सद्यश्चोच्चाटनं भवेत् तडागे स्थापयित्वा तु जलदारिद्र्यमाप्नुयात् मारणं सम्प्रवक्ष्यामि तवाहं शृणु सुब्रते नरस्थिलेखनीं कृत्वा चिताङ्गारं च कज्जलं प्रेतवस्त्रे लिखेदस्त्रं गर्ते कृत्वा समुत्तमं शंसाने निखनेत् सद्यः सहस्राद्रिपुमारणे न कुर्याद्विप्रजातिभ्यो मारणं मुक्तिमिच्छता देवानां ब्राह्मणानां च गवां चैव सुरेश्वरि उपद्रवं न कुर्वीत द्वेषबुद्ध्या कदाचन प्रयोक्तव्यं तथान्येषां न दोषो मुनिरब्रवीत इति सुदर्शन संहिताया आञ्जनेयास्त्रं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः।